नमो बुद्धाय प्रिय दर्शकों अशोक जय भीम। From our home near Vidya, Nagpur, नमो बुद्धाय। Good morning. The life cycle of ignorance and enlightenment. The enlightenment with the truth. Today, the life cycle of ignorance and enlightenment. Be enlightened with the truth. The life cycle of ignorance and enlightenment. Be enlightened with the truth.
Happy birthday, Prathamesh, with a mother and father. The beautiful birthday. Yes, we are the qualified family. And myself, Dr. Sachchidanand Fulekar. I have three children. One is Priyanka. She's so good girl. She B, MBA, English Literature, MA, and Law. And she got married with a Gaurav, a good boy. He was AIEEE, the first in the India. He's IIT. Both are the friends. Very good family. And my first child, Prathamesh Sachchidanand Fulekar. He's so lucky. He born when I jumped in Nagar Parishad election, when I was Upadhyaya, ex-president, deputy president of Tulsa. I was very famous. दोस्तों, प्रथमेश की एक ऐसी प्रतिमा है कि जब मैं 2 बार 25वें एज में और 30 में आमदार के लिए तुमसर और आमदार तिरोड़ा दोनों बार मुझे टिकट मिली थी और मैं पुलोत का अध्यक्ष था दिल्ली का यूथ का और मैं 25वें साल में 84 में मैं जब इलेक्शन लड़ा तो पुलोत छोड़ के मुझे ना समझ रहा था क्या है पुलोत। अगर समझ गया रहता तो उसी वक्त मेरा नंबर समाज कल्याण की स्थिति में रहता और फिर धीरे से मैंने प्रकाश आम्बेडकर बाबा साहब की आम्बेडकर चौड़क में मैं उनको ज्वाइन हुआ और 1984 में मैं इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में मेरी तो हार हुई 3 नंबर के मत मिले 32 सिंबल था मेरा इस बात का गर्व है कि मेरा सिंबल ही 38 था तो मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग थे उस समय मानकर गुरुजी जो सेंटर में मिनिस्टर थे खासदार थे मानकर गुरुजी मुझे चाहते थे बड़े से बातें की कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ फिर शिवनकर जी भी चाहते थे क्योंकि एक क्वालिफाइड आदमी उस वक्त का सौ बढ़ पर जब किसी से फाइट लेता है तो लोगों की भी चाहत हो जाती है कि ऐसे लोग हमारे तरफ में आ जाए खुद के बेसिक पर 18-19 साल का स्कूल ओपन किया खुद के बेसिक पर एक मिनिस्टर की लड़की के साथ शादी किया मुंबई की लड़की बुल्ढाना की पैदाइश की और आज हमारा संसार 35 साल 36 साल से ज़्यादा ऊपर अच्छा चल रहा है तीनों भी हम सभी लोग क्वालिफाइड है छोटा लावेश सभी लोग होशियार थे हमने ध्यान दिया हम टीचर थे संचालक थे
हमने हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दिया और हमने इनको वो हसीलत दी कि जिसे लोगों ने, माँ पिताजी ने करना चाहिए। और आज विद्या फुलेकर 4 बार नगर पालिका में चुन के आई बहुमतों से, 3 बार प्रेसिडेंट के लिए फाइट की। कुछ बड़े वर्ग के लोगों ने हमको प्रेसिडेंट नहीं होप दिया कि हम उनके साथ में हैं। एक बार विद्या सच्चिदानंद फुलेकर, मैंने पक्ष निकाला बीएसआरपी, और बीएसआरपी की वजह से भंडारा जिला, नागपुर जिला, विदर्भ के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग इलेक्शन में गिर गए। फिर प्रफुल्ल भाई को लगा कि भाई फुलेकर को अपन अपने अपोज में खड़े करने के बजाय इसको अपने पक्ष में ले लो, और मुझे भी लगा कि ये बड़े पक्ष में जाए। प्रफुल्ल भाई भंडारा जिले की चाहत है, चुन के आता है, अच्छे काम करते हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। तो आज खुद होकर शिक्षण क्षेत्र में विद्यापीठ में, जिस विद्यापीठ में मैंने 10 कॉलेज है, मैं प्रथमेश जब था तभी मैं शिक्षण सम्राट बन गया। तो प्रथमेश का हैप्पी बर्थडे बड़े धूम से मनाया। ऐसा हैप्पी बर्थडे उस वक्त हमारे लोगों ने, कठिन काम था। उस हैप्पी बर्थडे में सभी नगर सेवक, तीसरे माले में हैप्पी बर्थडे था, सब बच्चे लोग थे। आगे कैसे तैयार है उस हैप्पी बर्थडे की। तूफान से मचा हुआ हैप्पी बर्थडे, पूरे गांव को मैंने आमंत्रण किया। खान तराटे जी, अशोक कुकड़े, मधुकर कुकड़े, तिवारी, अमर रगड़े, सभी लोग, बहुत सारे पूरे गांव के लोग, डॉक्टर यादवराव, पूरे डॉक्टर दूसरे बुरे साहब, सभी लोग, कोचर से लेकर सभी लोग गांव में मेरी दोस्तानी थी। संतोष सीताकर नाम के प्रेसिडेंट थे, और एक शेड्यूल कास्ट का आदमी खुद के बेसिक पर आमदार की लड़ता है। नगर पालिका 2 बार आमदार की लड़ता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली से पूरे इंडिया की एक ही सीट जब मिलती है तो सच्चिदानंद फुलेकर को मिलती है। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और रामविलास पासवान गार्डन में बैठे थे, तो मेरे ससुर अर्जुनराव कस्तूरे, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, दिल्ली में जाकर वो टिकट हमने हासिल की। लेकिन कुछ पैसे के कारण कुछ लोगों ने इस टिकट को प्रकाश आंबेडकर ने खास करके पैसे भी मांगे, और शरद पवार जी से पैसे लेकर अपनी टिकट खुद को हराया। तो एक अड़ानी आदमी चुन के आया, और इसमें वो आज नहीं है। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोग उस वक्त में, ये मैं बीएड, डबल एमए और मेरी अंग्रेजी स्कूल तुमसर, गोबरवाई, चिखला माई, नागपुर और बहुत सारे जगह हो गई थी। और मेरे पास 10 करीबन हाई स्कूल थी, कुछ जूनियर कॉलेज थे,
हरदोली पांडराबड़ी, सलाई बुजुर्ग, सलाई खुर्द, आलीसुर, पीटेसुर, इस तरह से मेरे पास में स्कूल थी। जूनियर कॉलेज थे, वोकेशनल थे, आईटीआई थे। तो मैं शिक्षण सम्राट 20 स्कूल के नजीक पास कॉलेजेस, और जस्ट मुझे फिजिकल एजुकेशन के 2 कॉलेज मिले थे, यानी मैं अमरावती विद्यापीठ और नागपुर विद्यापीठ में एंट्री किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों पति पत्नी राजकारण में हैं, तो लड़के लोगों को स्कूल कॉलेज में तो इंटरेस्ट है, लेकिन राजकारण में इंटरेस्ट है कि नहीं। लेकिन लोगों ने पकड़ लिया और खुद तीसरा बच्चा लावेश इसने राजकारण में एंट्री किया, और विद्यापीठ के राजकारण में उसकी चाहत थी कि मैं विद्यापीठ के राजकारण में एंट्री करूं, और वो आ गया। खुशी की बात है, 5 दिन कम भरने से हमारी पहचान विद्यापीठ में पूरन मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा, कायवाड़े जी, पवन राव, प्रकाश गजवी और डी.के. अग्रवाल। तो विद्यापीठ में प्रकाश के कारण मेरी जगह मैनेजमेंट में नहीं आ सकी, और मुझे कोई मेरे विद्यापीठ के राजकारण में इंटरेस्ट भी नहीं था, और उतना नॉलेज भी नहीं रखता था। लेकिन बहुत बार मुझे ऑफर आया बीजेपी की तरफ से कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मेरी जो चाहत थी कि मेरे बच्चों ने भी इलेक्शन में आना चाहिए, और वो पूरी हुई। तो प्रथमेश खड़ा है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसके 29वें हैप्पी बर्थडे पर मेरी तरफ से लाख दुआएं। तो आज 12 दिसंबर 17 को उसका इलेक्शन है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आप इधर क्यों बढ़ गए, कुछ कांग्रेस के लोगों ने पूछा। तो दोस्त, अपनी अपनी चाहत है, अगर बच्चे जिस तरफ जाते हैं वो उनका अधिकार है। बाबा साहब ने 18 साल से मतदान का अधिकार रखा है, और बच्चे तो हाफ उम्र के हो गए, अगर वो जाते हैं तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है, और उन्होंने सही रास्ता अपनाया, इसकी मुझे खुशी है। पॉजिटिव लाइन से जा रहे हैं। 30 साल से मेरा भी सफर इस लाइन पर जाने का था, 40 साल से, लेकिन हमारी असमझदारी, हमारी भूल जो हमें तो पश्चाताप की कोई बात नहीं है। मैं जहाँ हूँ, जिस मकान से हूँ, जिस मकान में हूँ, आज भी फिर मैं काशीराम से जुड़ा, काशीराम जी से अच्छे विचार के साथ में भी जुड़ा। आज मायावती से भी मुलाकात है,
बड़े बड़े लोगों की चाह थी कि मैं बीएसपी को संभालूं, लेकिन बीएसपी की हालत देखते हुए मायावती की गायब के कारण तो ये सब बातें पैसे के कारण होते हैं। लोग राजकारण में दारू, पैसा और दूर तक चले जाते हैं। तो सब बातें देखते हुए आई एम सो हैप्पी, मेरे लड़के लोग अच्छे राजकारण से शुरुआत कर रहे हैं, पॉजिटिव राजकारण से शुरू कर रहे हैं। और विद्यापीठ का राजकारण पढ़े लिखे लोग हैं। प्रथमेश एमटेक 80% के ऊपर, पहले से मैथ में बहुत होशियार था, बचपन से गाड़ी चलाता है, ना डर है किसी को और डरता नहीं किसी से, मिठास स्वभाव का है। और जो डरता नहीं वो आगे बढ़ता है। चलो दोस्तों, खुशी की बात है, हम खुशी के घर में आए हैं और खुशी खुशी हम जहाँ भी रहते हैं हमारी ईमानदारी हमारे साथ में है। हम बेईमानी के रास्ते पर नहीं हैं, ईमानदारी हमारे साथ में है, ईमानदारी हमारे साथ में है, ईमानदारी हमारे साथ में है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो समा समुदास बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि अनादिपाता वीरमणि अनादिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरा मेरा यमज शूरा मेरा यमज
हर माँ पिता दी, हर माँ और फादर चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे निकले। हमारे भी गांव में, तुमसर में, इस परेड में कुछ गुंडेगिरी बढ़ गई, और वो गुंडेगिरी इस तरह से बढ़ी कि गर्दन तोड़ना, किसी को मार डालना, बंदूक भी चलाना। ऐसे परेड में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे बच्चों को नागपुर सिटी में खामला के प्लेस में अच्छे बिल्डिंग में अच्छे संस्कार में पढ़ाऊं, और मेरा डिसीजन मेरे काम में आ गया। और बच्चे, तीनों बच्चे खामला के स्कूल में रहे, हम भी रहे उनके साथ में। लोगों को लगा कि हम गांव छोड़ दिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसी हवा किया कि हम गांव छोड़ दिए, बस अपना गांव, इतना बड़ा खेती, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा कॉलेज कैसे क्या छोड़ेंगे। और फिर लोग हमको 7 बार तुमसर के नगर पालिका में मेंबर करके नगर पालिका में चुन के दिए। इस 35 साल में मैं खासदार की और कई बार आमदार की लड़ा। 5 बार तुमसर से आमदार की लड़ा, 1 बार तिरोड़ा से आमदार की लड़ा, 2 बार भंडारे से आमदार की लड़ा। तो मैं तो थकता नहीं दोस्तों। थकता है वो जिसके विचार थके हैं। मुझे थकना नहीं आता, मरते दम तक काम करना आता है। अच्छी हेल्थ, सुविचार से खाना, सुविचार से सोचना। मैं किसी पक्ष को कभी बुरा नहीं समझता, कोई पक्ष में बुरे नहीं होते। लोकशाही ये बाबा साहब ने लिखी है, तो बहुत अच्छी लोकशाही है, बाबा साहब की लोकशाही, संविधान। लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले अगर बुरे हो। हर जगह घरानेशाही है। हम तो घरानेशाही नहीं, हमारी मेहनत है। हम सब 5 लड़के डॉक्टरेट होने वाले हैं, हमारे दामाद भी डॉक्टरेट होंगे। हमारे घर में पीएचडी की संख्या बहुत है। डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर is the first PhD in our house. Now he is DSc, he is very qualified person. Myself, I am also doctorate 2005 from Mumbai Vidyapit. This is a good Vidyapit in Maharashtra. दोस्तों, पढ़ाई में हम लोग अग्रसर हैं और हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी बातों की तरफ रहते हैं, दीक्षा भूमि के पास रहते हैं। दीक्षा भूमि के विचार हमारे हैं। हम किसी पक्ष में जाते हैं, लेकिन धर्म हमारा बुद्ध है, हम बुद्धिस्ट हैं। भारत का तिरंगे झंडे का अशोक चक्र को हम मानते हैं। हम सम्राट अशोक को मानते हैं। हम बाबा साहब के विचार को मानते हैं। तो यार, ये फडणवीस, ये गडकरी जी, शोभाताई फडणवीस, ये सभी लोग तो, मोदी जी, शिवनकर हो, बाबा साहब को मानते हैं। बड़ा साहेब ठाकरे भी बाबा साहब को मानते थे, उनके पिताजी भी मानते थे। ओशो भी बाबा साहब को मानते हैं। गोयनका तो बाबा साहब को अलग ही तरह से मानते हैं। ऐसा कौन सा पक्ष है जो बाबा साहब को नहीं मानता? हम नगर पालिका में इतने साल रहे, दोनों पति पत्नी, 35 साल, 40 साल, कभी नगर पालिका का 1 पैसा नहीं खाया। वार्ड के लिए अच्छे काम किए, इसलिए लोग हमको चुन के देते हैं। हमारे वार्ड में फूके जी आए, एक्स मिनिस्टर थे, पालक मंत्री थे। वो हमको दिल्ली में मिले। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई वो ईमानदार है, मेहनती है,
और लोग हमें चुन के देते हैं। हमें लोग इसलिए चुन के देते हैं कि हम कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बने, हमने रोडों के पैसे नहीं खाए, किसी के पैसे नहीं खाए, ईमानदारी से जिए और बड़े बड़े को ईमानदारी के साथ गिराए। राजकारण में बड़े बड़े को गिराने का भी नाम हमारा इतिहास में है प्यारे दोस्तों। नाउ टुडे द लाइफ साइकिल ऑफ द ignorance and enlightenment be enlightened with truth। ये जिंदगी का लाइफ साइकिल है और ये चलता है, ये चलेगा, ये चलता रहेगा आगे से चलता हुआ। आज के दिन मैं आध्यात्मिक शक्ति की तरफ बढ़ गया हूँ और मेरे हर दिन यूट्यूब बनते हैं। तो आइए दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि।
The life cycle of ignorance and enlightenment. Be enlightenment, be enlightened with the truth. Namo Buddhaya, Namo Dhamma, Namo Sangha. Satyo, not today's ignorance and enlightened. The life cycle of ignorance and enlightenment. The life cycle of ignorance and enlightenment. Our life has a cycle, but we think there is just one cycle, the cycle of birth and death. And the cycle continue and continue and continue. But reality there is a two life cycle. The life cycle of ignorance and the life cycle of enlightenment. What is this life cycle of ignorance? We are born. Why we are born? We are born out of the path karma. There is no the path karma. There is will be truth. It's simple to understand. I do not think people struggle. We are born blind because the past karma. We are born the rich karma and the family of the great opportunity because of our past karma. Therefore, we are born the best of our karma. Many people think in this cycle of ignorance, everything is predestined. But we are the puppet, and the past karma is so programmed. But our birth and the date and the marriage or success, everything the predetermined, the predetermined. This is the lie. This is not true. Life is twin karma. The twist karma means the past karma decide our birth. We come to the earth, we have a free will. We are the intelligence. We have the power of discrimination. We use our free will, the power of discrimination, the choose karma. When we choose karma, this choice of karma of our action, this deed becomes the seed, and they are planted in the cycle of the life, our life. So this is the parama karma and the opening balance, and that is again karma, this current account of present deeds. Both the karma because the truth karma, which is determinant of our life. It's just like you're driving a car on the road. You have a turn the right and left. You can go fast, slow, and then stop, and you can go reverse. But you change the road. Can you go down the change of the road? The play did. You cannot change that road. The road like is the past karma, and the can change. It is done. It will unfold. But you can change your present karma. It is driving the car. And you can change your present karma. So what happened in life? Just like a seed you have planted, you design the fruit of the tree. You did in the plant decide this thing. Life is unfold. Life is unfold. And life is unfold. And one day the body will be die. Date is certain. And whether it is a good karma and bad karma, it is recorded in the book of the karma. Ultimately, we die. Ultimately, we die. And then we are the reborn. And this is on and on. The body dies. The body dies. But the one, we allow the body, me, mind, and ego, those so-called kind, the who will actually our enemy, is called that mind. But we cultivate kind and salute it. The mind and the ego that say, the mind and the ego become a me. The body dies. The me is born. We take a rebirth on the earth based on our karma. Now, karma is said to be three account. An opening balance that is the start with the
one current account, and then there is and the continue account where you call when is the corpus and the continue account. What if we die? Our opening balance or our current cup become the gate added to the karma. We continue the corpus of the warehouse. Our past karma, we don't know how many lives. Nobody can be sure. But then again, we are born and this is gone on and on. This is the life cycle of the circle of the ignorance. What is the life cycle and circle of enlightenment? It is quite different. We are born based on karma. We do karma. There is twin karma, and life goes to her and on. But we use an intellect in the cycle of the enlightenment, in the cycle of enlightenment. We use our intellect in cycle of the enlightenment, and we realize the truth. I am not I. I am not this body that is the wild in die. I am not the mind and the ego me. The return to the earth of the rebirth. I go to the find the mind. Where is the mind? I cannot find. Where is the ego? There is I, me, mine. There is no ego. Therefore, I realize I am not. I am the mind of the ego, me. Who I am. I am the spark of life. Yes, O you, young soul, the spark of unique life, the come alive, not on my birthday. My birthday is a fake and it's correct. Because you born 9 months ago. You are born where the first call to the zygote was created for the fertilization, the sperm, and to come to the happen, the fertilization happen. The, that is the birth. 9 months before our so-called birth. When we realize this, the circle of the enlightenment, the cycle of the enlightenment start. We realize I am the spark of the unique life. I am that soul. When I realize I am that soul, I am realize I am not the bond. I am not my mind cannot find. I am cannot the ego. They appears my the false identity. This is called realization. This is called the enlightenment. When you are in the enlightenment, I am not this. I am not this. I am not that. This leads us from the state of purification and illumines the state of realization and ultimately the state of liberation. Unification, the cycle of the ignorance. We are die, we return to the earth of the birth. We are reborn to goes and goes on. The cycle of the enlightenment. We live, we realize, in enlightenment, we are the liberated. We are the united with Shiv, supreme emperor power. In the cycle of the ignorance, we believe there is a God, somewhere in the state of the life. But it is a cycle of the ignorance and cycle of the ignorance. We believe that the myself they have the God looked up, but the cycle of the ignorance they realize the truth. We just live, we die, and before that we cry. We cry up the sky, oh ask why. This is a circle of the ignorance. In the cycle of the ignorance, the cycle goes on and on. We are suffer. We suffer pain of the body and we mind the ignorance of the ego. We think we are that. The lightened being does not suffer. He has the realization suffer of the physical pain. I am not the mind I cannot find. I am not the ego that say. In the cycle of the ignorance, the mind causes worry, state, anxiety, dejection, and in of the suicide, the cycle of the enlightenment. There is no mind, there is no fear, there is no state and anxiety and depression because there is the aggressive and of thought. In the cycle of the ignorance, I am the ego full of anger, hate, revenge, jealousy. In the cycle of the enlightenment, this is no ego. I realize the soul, you are the soul. We all come to the ship,
the supreme immemorial power. Go back to the ship. In the cycle of the ignorance, who is God? Where is the God? What is the God? The cycle of the enlightenment, we realize God is ship. God is the supreme imperial power. In the cycle of ignorance, there is a hundred of gods, thousands of God, and of the religions. The cycle of the enlightenment, we realize we are one God, who is not a God, the supreme of the imperial power. The seabed birthed and death bred, beginning and endless. The cause of the cause. Ship is the cause of the effect. We realize in the cycle of the enlightenment, but in the cycle of ignorance. We lived and we die in ignorance. Unfortunately, we can ship away the darkness from the broom, with the light, with the needle of light. The cycle of the ignorance is no light. To lighten that is the inside. In the cycle of the enlightenment, we switch on the light within, and there is the enlightenment. There is a realization of the truth. I am not I. I am that power. I am the manifestation of that power. In the cycle of ignorance, we are the remembering the superficial experience. In the cycle of the enlightenment, we are realizing the spirit, human experience. The cycle of the enlightenment, liberation as the shadow, and it united the ship, and the God is ship, and ship is an angry. Even the scientists agree. I believe that the physicals have been at the Nobel Prize of the country of physicals. It is the country, everything into millions. It is not actually as illusion the better understood in the myth lie. It appears to be, but it is not. Everything is the manifestations of the divine power. And the scientists no agree to it, but they are not called angry. It be energy. The spirit will call it power. One day science will agree. The intelligent man could not have been made by just a bang. In the cycle of the enlightenment, we realize we are the manifestations of the Supreme. We are a part of the driving power. That is why there is much intelligence. There is so much beauty in the world and everything beautiful in the diving. Every molecules of the matters and the discourse by the science, the theory of the particular duality is nothing but the energy. Spiritual said the thousands of years ago, we are not this, we are the power. We are the supreme power. In the cycle of the ignorance, we realize we like it comes to the ocean of the give the back to the ocean. The cycle of the enlightenment, we realize is just effect. The supreme of the cause is the cause. We realize the truth. Friends, it is up to us. We can look at all the beautiful things in the world. Oh, wow, the beautiful things in the world, and ask how. When we ask how, it is this the answer. The supreme ship manifest, and the beautiful mountains, and the ocean, and the lake, and the star, everything. Everything beautiful in the diving. Everything is manifestation of the diving. There is no real magic. It is just a logic. We die. We don't die, the body die. People will say we passed away. We go, oh, who may went. The people is cycle of the ignorance. And we go to the distant heaven. We go to how do we go? The body dead, it's written of the earth. Who go? Our ignorance is to go the back to the earth. In the rebirth, because we are the mind and ego, neither the ego, the thought, and the God lives the sky are live when we are the cycle of ignorant and the heaven and pale and here on the earth do not realize. They written in the Rubier, who the realized mind, ego, body, no rebirth. There is no liberation. We become one with thine and the unification. There is unification.
The cycle of enlightenment, it is realized is the cause of the rebirth. The cause of the rebirth is coming to the earth. It's karma. Because of the mind of the ego say. We create a karma, good or bad, but return to the earth of the rebirth. Because we are karma. But cycle of the enlightenment, we are realized I am not. With the become of the divine instrument. There is no karma. If there is no karma, there is no rebirth. There is a liberation. There is a unification. The Buddha called is Sanatana Dharma called moksha. Western world called it is salvation. There are the different name. It is one truth. It is a freedom, liberation from the matter on earth. Just as the unification after the liberation from the rebirth. We have to choose. We have to leave the die and the circle of ignorance. We want to live on the liberal and the cycle of enlightenment. On the human being can choose a dog or a frog, butterfly or bee or tree, or the life and the olives without the gift of the choice of willpower. We have some power, the basic intelligence. They are not fully developed. We human beings are. There be for the choice. We choose, we can lose. We can just live to die and cycle of ignorance. We can attain the nirvana, ananda, and this cycle of enlightenment. For this we started in the spiritual master of the mantra and the guru. We need to go to the power in the last question. Can realize we God? Never. All religions are good. The religion only the country and the teacher ABC of God. If you want God, God realizes comes with self-realization. It comes to the your cycle and the enlightenment. You overcome the ignorance of the realize of truth. This is the way of the liberation and unification with Javin. We are all alive. But let us get into our head. We cannot attain the enlightenment after we are dead. If we want the enlightenment, we must go to the kitchen today, which realize the truth, escape from the cycle of ignorance, get to the cycle of enlightenment. Realize that we're all the manifesting on one divine. The realization that the God is ship, the supreme immoral power. God is possible, the practical of ship, the supreme immoral power in every multitude of master. When we realize the mountain of the manifestations of the divine, the essence of the manifestation of the divine, every bird, every culture, every human being is divine. You develop love from the diving. Love can become a fountain of joy. It doesn't happen to the cycle of ignorance. This happens only the cycle of enlightenment. And you want to get out the ignorance, then we have to get in the cycle of enlightenment. We have to choose one cycle, either in the cycle of the ignorance, or will turn to the cycle of the ignorance. As we live, we have to decide which cycle we want. When we want the cycle of the ignorance, we want of the cycle of the enlightenment. This is our choice. And this is the most important choice that we must make in life. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddham